Hello students, in this video we will discuss chapter number 9, respiration in organisms. And in this chapter we will cover topics respiration and its types, aerobic and anaerobic respiration, respiration in animals and respiration in plants. Living things requires energy for their activities of life. Energy is released in the cells by the breakdown and oxidation of food by a process which is known as respiration. Respiration. What is respiration? Respiration is a process which involves taking in oxygen, using it for releasing energy by the oxidation of food and eliminating waste products such as carbon dioxide and water. The two main processes of respiration are internal respiration and external respiration. Now, what is internal respiration and what is external respiration? The oxygen that we breathe in reaches to all our body parts and even to each cells. Since the process of respiration takes place inside the cells of our body, it is known as internal respiration or cellular respiration. Now, external respiration. The process in which oxygen is taken in and carbon dioxide is given out by living organisms is called as external respiration. It is also known as breathing. Breathing is a part of respiration. During breathing, the taking in of air rich in oxygen is called as inhalation, while giving out air which is rich in carbon dioxide is known as exhalation. Breathing rate. The number of times a person breathes in 1 minute is known as breathing rate. A normal human beings breathe 15 to 20 times per minute. Now we will discuss mechanism of breathing. इसमें दो स्टेप्स है, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग. सबसे पहले देखेंगे इनहेलिंग क्या होता है. During inhaling, the intercostal muscles are contracted. The ribs are pushed upwards and outwards, and the diaphragm moves downwards. This upward and outward movement of ribs and downward movement of diaphragm adds the space in the chest cavity. This increases the volume of airtight chest cavity and creates the low pressure inside the lungs. Now exhaling. During exhaling, the intercostal muscles relax and the ribs moves downwards and inward, and diaphragm relax and move upward to back its original position. The downward and inward movement of ribs and the upward movement of diaphragm reduces the space in the chest cavity. Now we will discuss about aerobic respiration. The word aerobic means in the presence of oxygen. In aerobic respiration, the food molecules combine with oxygen and are then broken down into carbon dioxide and water to release energy. All the organisms who obtain their energy from aerobic respiration cannot live without oxygen. Now anaerobic respiration. The word anaerobic means in the absence of oxygen. In this process, energy is released from the food by breaking it down chemically. But in this process, there is absence of oxygen, or we can say that reaction does not use oxygen, though they often produce carbon dioxide. Now our new topic is respiration in animals. We know that animals obtain energy from the food they eat. Before this energy can be used by the cells of the body, it must be released from the process from the food by respiration. And just like human beings, some animals like cows, elephants have lungs in their chest cavity for respiration, whereas some animals such as grasshopper, earthworms, fish do not have lungs. So how do they breathe? How do they breathe without lungs? Let us find out. तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्थवॉर्म कि अर्थवॉर्म में रेस्पिरेशन कैसे होता है. गैसियस एक्सचेंज जो होता है अर्थवॉर्म में, क्योंकि इसमें लंग्स तो होते नहीं है इसकी बॉडी में, तो रेस्पिरेशन कैसे होता है. अर्थवॉर्म इनहेबिट्स बरो इन डैम्प सॉइल एंड इमर्ज टू फीड इन डार्कनेस. अर्थवॉर्म के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है इसकी मॉइस्ट स्किन के थ्रू.
अर्थवॉर्म की जो स्किन होती है वो इतनी मॉइस्ट और इतनी थिन होती है जो कि एब्जॉर्ब करती है ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड डिलीवर इट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स. There are network of capillaries in its moist skin जो which also eliminates carbon dioxide from the body. अब हम बात करते हैं फिश इनके अंदर गैसेस एक्सचेंज होता है एक गिल्स की हेल्प से. फिश absorb dissolved oxygen from water by means of gills. गिल्स आर द प्रोजेक्शन ऑन द स्किन. इनके स्किन के ऊपर एक प्रोजेक्शन जैसे होते हैं जिसको बोलते हैं गिल्स, जो कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो कि वाटर में डिसॉल्व हुई होती है. उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के बाद इस एब्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन को डिलीवर कर देते हैं फुल बॉडी पार्ट्स में. सो इस तरह से फिश में, जो कि एक एक्वेटिक एनिमल है, गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता है. Now insects. Air reaches various parts and organs of the insects via an elaborate system of branching tubes called trachea. ट्रेकिया एक ऐसा ब्रांचिंग ट्यूब का नेटवर्क कह सकते हैं हम, जो कि इंसेक्ट्स के अंदर होता है, जिसके थ्रू उनमें गैसियस एक्सचेंज होता है. अब इसी ट्रेकिया की हेल्प से वो गैस इन एंड आउट करते हैं. ट्रेकिया की जो ओपनिंग होती है वो होती है एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी. इंसेक्ट्स की जो एक्सटीरियर बॉडी होती है उसमें छोटे छोटे टाइनी होल्स होते हैं जिनको बोलते हैं स्पिरेकल्स, जिनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता है. नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अकर्स थ्रू लीव्स, stems and roots. In leaves there are small openings, or we can say that in leaves there are tiny pores on the lower surface of the leaves which are known as stomata. और इसी स्टोमेटा की हेल्प से जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं उनमें गैसियस एक्सचेंज हो पाता है. और अगर हम बात करें स्टेम की, तो स्टेम में भी छोटे छोटी ओपनिंग्स होती हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको कहा जाता है लेंटिसेल्स. इन ही लेंटिसेल्स की हेल्प से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड आउट होती है. तो लीव्स में स्टोमेटा और स्टेम्स में लेंटिसेल्स की हेल्प से गैसियस एक्सचेंज हो पाता है. अगर हम बात करते हैं रूट की, तो रूट्स हैव टीनी हेयर्स. Root has tiny hairs. These root hairs trap, or we can say that take in oxygen from the space present between the soil particles and then transport it to the entire plant. Thank you.